and all the men, of course. Thank you so much for joining us. Yes. Probably I missed thanking one gentleman, in the rush of things. There's another small, incident I want to share with everyone. When Sharvi wrote the book and we were trying to look for a publisher, there weren't any, because debut, writer or author or novelist, hardly seldom anyone basically, backs that individual, to publish the book. But when we met Sagarji and Anecdote, I think they were so gracious to basically publish the book. And I really want to thank Anecdote and Sagarji to you to publish the book. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Alright, thank you. Options on the table, and I agree on that. I realized my true calling through trial and error and lost a few valuable years in this process. I would never want any child to go through the same experience ever, unquote. Welcome, put your hands together for Dr. Anjali. Thank you Dr. Anjali for coming and joining us. And I guess all of you can have a seat. Thank you for giving us a Cambridge International and Billabong High International School. She has a rich experience in providing holistic guidance to children, teenagers as well as professionals. Anjali has conducted numerous interactive workshops in schools as well as in corporates on personality development. She has also mentored students for their group discussions and personal interviews, for their admission entrance examinations like CAT. And before turning an educator, she has been a seasoned industry professional, having worked for a range of corporate firms during her career from HDFC Bank, Saregama India and Career Launcher. As per Ms. Anjali, the need for guidance who've been learning under your guidance. So thank you so much for being here. We would love to have you take your seat and we'll begin the conversation. But thank you for gracing the occasion. Wait. Ma'am, 1 second. One second. Wait. That the entire story kind of connects with. So again, I'm pretty sure all of us are familiar with who Kalki is, the final avatar of Lord Vishnu. But overall, I believe the book and all of us in general who are present here today have one uniting, one defining character, and that is hope. Hope, I believe, is the most important thing in this world, and everything in this book, from beginning to the end, the beginning of the ordinary to reaching the extraordinary, something we all dream of, is something we all hope for. Every morning when we wake up and we choose to go about our day to fight what we believe in, it is the hope that we can go from ordinary to extraordinary. And that's what I believe Kalki Avatar symbolizes for a lot of us, that someone will come one day, someone will take us to a new golden age, someone will lead us somewhere new, and that is hope at the end of the day. So that is, I believe, what is inspiring my book, to bring hope to people that, okay, things might be a bit poor right now, but it is up to you, it is up to us, it is up to some ordinary girl, Karthika Savarkar, it is up to ordinary people to become the Kalki Avatar of their own lives. And very interesting, I would also want you to talk about the book, that what the book is all about, because I know I cannot talk about it without giving the spoilers, but just to add to it, while I was reading the book, there were two very prominent books that came to my mind. One was Educated by Tara Westover, wherein she is so ordinary and nothing right is happening in her life, and every single day it's so rushed that everything extraordinary is happening with very ordinary life. And the second one is Michelle Obama's autobiography, wherein she talks about living such a fantastic, extraordinary life, and she thinks that nothing is extraordinary in her life, and that's how it is written. So when we look at Karthika, she does not know what her destiny is, and the book starts from there. So would you also want to talk to everybody that how, like you spoke about hope, and how did this start and how did this book happen, and what were the initial thoughts that you had as a 17-year-old coming and writing this explosive of a story? Again, I think you've summarized it quite well. All of us start as someone who doesn't know who we want to be, and someone ordinary. And like I've told many of you today as well, I started writing this book when I was around 12 or 13. And that is our age when we as teenagers, we as people are thinking, what are we doing with our lives?
We have to soon choose the stream which we will go to. We have to soon choose our career path. So that is the moment I believe I was feeling that I don't know what my destiny is. I don't know what I'm going to be doing with my future. And that definitely inspired Karthika. A lot of people, my family in general, have teased me that Karthika is more of a self-insert of myself, but that wouldn't entirely be accurate. I believe she is who I want to be. That is why she starts out as ordinary, not knowing who she wants to be. And then throughout the story, she finds her Krishna, as I found Anjali ma'am, as I found my parents, as I found all of you, as I found Sagar sir, and she becomes someone extraordinary. She becomes someone who knows who she wants to be, and someone who helps her own country, her own culture, her own dharma while doing it. Very interesting. And you know, apart from just one person playing an extraordinary role, there are two very important characters in the book, Karthika and Karan, and they're twin siblings. And I somehow, you know, was kind of also feeling a bit sad while I was reading it because destiny favors one more than the other. But the book has very beautiful undertone wherein it talks about sibling relationships, loyalty towards each other, and what goes in a relationship wherein you know each other so well that you know you've been brought up together. So would you also want to talk about that segment of the book, because I think that's a very powerful segment and plays a very important role in the entire book. Again, as many of you might know, I do not have any siblings of my own. In fact, my parents have been filling in that role for as long as I can remember. So again, so when I started reading this book, I did wish for someone to be there with Karthika, someone who maybe wasn't as extraordinary, maybe someone who had figured out his destiny as I had back then, but someone who's working towards it to maybe give the message that, hey, you know, sometimes if you are jealous of your friends, your siblings, that is okay, that is something you can build towards. But on a deeper note, this book is inspired by and is tied a lot towards our itihas, our history, our culture, and one of the most defining relationships in all of our epics is the one of siblinghood. That is often expressed through brotherhood. You know, we have Sri Ram, Lakshman, we have the entire Mahabharata favor towards brotherhood. But since the main character was a girl, I definitely wanted to explore that like sibling relationship of knowing each other forever, as you've seen, but still there being this kind of competition, there being this kind of tension where you don't know where either of you are going to end up, which I wanted to explore. So that was one of my favorite parts, and thank you for taking note of that. And I was, you know, Sharvi, I was very surprised and pleasantly at that, because while I was reading it and exploring the sibling relationship that you've built in, I was also thinking about a lot of, you know, similar gender siblings like Krishna and Baldev, you know, like the Pandavas, and a lot more. And while I was thinking about this, I was also thinking there is a lot of reference, there is a lot of, you know, there's a lot of creation of this book that has happened from the Ramayanas, Mahabharata, also from the Puranas. But at a very larger space, I also felt that I was entering into a Narnia world or Harry Potter world, and that kind of amazed me because I was like, oh wow, I have never thought, you know, mixing fantasy and mythology, though we read a lot of books like that, but this was, you know, very charismatic at that. I was just seeing that everybody was larger than life. So is it that Sharvi feels that, you know, everybody has a larger than life persona? Definitely. Like I've said, Karthika is me, but someone who I want to be, and all of us have that one ideal person who we hope to become one day. Maybe that's not someone we know in real life, that's someone we want to be, and that's why we gravitate so much towards larger than life stories, towards mythology, because those are the people we look up to from a young age. And as for the references you listed, that's very, very true. The main motive behind me writing this book was to blend itihas, mythology, and current modern fantasy and fiction. So I've grown up outside of India. I grew up in Qatar, in a more westernized institution, where even though I was surrounded by Indians, all of us had grown up away from India, and we had internalized Western perspectives of what India is, of what Bharat is, of what our culture is. And we viewed all this as very orthodox, as very backward, as something that we shouldn't be proud of until the West is proud of it. We are only proud of yoga and Ayurveda when the US says that it's posh and it's cool. And I found that very disturbing, I would say, that all of this is ours. It's our home, it's our culture, and we have to keep it alive and we have to be proud of it in a way where we can be proud of ourselves.
There is what inspired this book. I grew up reading Harry Potter, reading Percy Jackson, all these fantasy fiction books which everyone my age loved. But at home, I grew up listening to stories of Ramayana and Mahabharata. Thanks to my parents, I was very rooted in my Indian culture. So I wanted to bring both of these things together so that people my age would enjoy these stories, would enjoy our values and these intrinsic relationships, like the ones of brotherhood, of family, without it sounding preachy, without it sounding like something your grandparents are forcing on you, but something like you are reading it of your own volition and you are understanding what it is because you enjoyed reading it. And Sharvi, thank you for highlighting that. I also wanted to make you all to see this lovely cover, which has such a super blend of, you know, the Indian itihas and also the knight in shining armor. So the sword that's shining high. So I think this is such a beautiful blend when we look at you know, covers like that that reveal much more than what lies, you know, what we can see with our eyes, and the book is such. So Sharvi, I would want you to also talk about how, you know, what was your writing journey? Because as you know, as a student with so much of curriculum falling over heads, our heads these days, with the rat race of competitive examinations, I being a part of, I have done it all and I've been there, so I know it how mad that is. The IITs and the IIMs and everything, but and then, you know, securing such a wonderful position in a very interesting school. What do you think, you know, how has been your reading and writing journey majorly for this book is what I would want to talk about. Any references that you have drawn from books, some authors that you have loved reading, you know, during the process? Again, like I said, this book has been a labor of love for quite a while. I first conceptualized the book, started writing it when I was around 12. So it has been a long road coming here. And as I grew older, the main manuscript, no matter how finished, ready I thought it was, it kept changing, kept evolving with me as I grew older. So I believe if you want to know who I am, you read this book and you understand. So my writing journey was definitely, like I said, wanting to mix two things I loved the most, and that vision, that motivation kept me going, that one day some kid will read my book and think that, hey, maybe my culture isn't as orthodox as I was being taught, maybe I should be proud of it. And that would give some kid the confidence which I really lacked when I was their age. And that vision was definitely what kept me going. So as an author, I believe all of us need to have an end goal, an end destination. I remember back then I was a big fan of J.K. Rowling, particularly her writing process, writing prowess. And I remember her saying that she wrote the final chapter of the final book before she wrote the first book itself, that you will get there one day. And I believe that this goal, this vision of a child reading my book was definitely, you will get there one day, kind of frame for me. Again, all of you over here, all of you have been there for parts of my writing journey, and hopefully many of you will be there in the future as well. So all of you know what the writing journey has been about. And as for inspirations, again, like I said, the books that define a current generation, Harry Potter, Percy Jackson, but more than that, the tropes, the values, the storylines, and the morals which come with our own itihas. Not just Ramayana and Mahabharata, which you're all familiar with, but the Puranas, the Vedas, the ones which have more intricate storylines, which I hope I have represented in a good enough way over here, and many draws from traditional Ayurveda and yoga as well, which I hope will be educational for some people our age as well. That's quite interesting, and I'm sure, you know, there are a lot of things that we often take as you know, something that we know about, but when we dive deep into such characters which are also fictionalized and also talk about those deep you know, teachings that you know, we've forgotten, or we are forgetting, or we're thinking about it in a different manner, I think this book definitely, you know, kind of brings you back, and it makes you ponder over certain things. So I think that is quite fascinating. Also, Sharvi, I would want to ask that what is it, you know, while writing this book, what is it that kind of surprised you? Like, you know, for every writer, there's a whiteboard you go back to, and you know, you kind of plot everything. I don't know if your journey has been like that, but what happens is that, you know, you have a plan, you have a plot, you have characters, you know how they're behaving, and while writing those characters, something suddenly shifts, and I think that happens with most of us while we're writing a story. Were there any such characters
which were adamant that no, I will not let you write the way you want me to write, but I will behave like this, which actually surprised you, which changed their path, so your story also diverted a bit? Like ma'am said, as we write a story, the longer we write a story, these characters can take a life of their own. The more you empathize with them, the more you understand them, they become their own people, and at some level you lose the puppet strings to them, I suppose, that they are the ones who are guiding you to the end of the story. And like I said, I've come back to the book many times, redone it. Another step before we start up this conversation, quite a few things that we wanted to do today, and with Dr. Anjali talking about it, the next is I would love to call Sharvi's parents on stage, because they have been very, very instrumental in what Dr. Anjali talked about it. Would love to invite the parents to come on stage, and I guess I'm sure one of them would love to talk something about Sharvi. So. First of all, thank you, Anjali. Thanks for coming here and gracing this occasion. Thank you, Etana, for hosting such a wonderful show. I was told I should be very brief and not talk too much. So I'll try to be brief as much as I can. What I would like to talk about Sharvi is one recent episode which probably kind of summarizes how she is, or how she's basically turned up in the middle of all of you. Basically, when her 12th results came out, I mean, it was a very, how do I call it, a joyous moment. She had secured 97.4%, so we are very happy. So probably the results came out 12 o'clock India time. So I mean, there were election exchange, good exchanges happening. We did not know that time that she had also secured something, one more important thing. Later on, probably at 6 o'clock, 7 o'clock in the evening, the DPS, her school, announced that she topped humanities, and she also came second overall in the school. So that evening when I was, we were talking to her, I just asked her basically, how do you feel? What's your feeling right now? How do you feel about the whole day today? So she actually made a very, very, to me it was a very important point. She said, it's good. It felt good. Of course, it was a good moment. But the most important thing was the process. I mean, all these 9-10 years that I've been studying, I mean, my teachers, whoever taught me outside school, I mean, Anjali and your good self, the whole process basically was so enriching. And I love the process and the result. And she said basically, if we have to do something again, something like this, it would be the process that I would like to repeat again, going into my bachelor's and master's. So that was very moving for me to come from a 17-year-old kid. That's where we realized that she's in good hands. She's been raised very well and she's ready to go somewhere else, and take her career forward. So that is our moment of elation from that nice chat. So that's Sharvi for all of us. So that's Nice. But thank you for being such an emotional father. All dads are like that. I'm just thinking about my dad right now. He feels the same, but I would want you to stay in this lovely romanticizing book lovers weather outside, and all of you being here. It is such an opportune moment to have such amazing people sitting here for a book launch of a wonderful, wonderful person and her beautiful book. And I'm so looking forward to having this conversation with Sharvi today. And why don't we all start with a big round of applause for ourselves for being here. And I'm so glad that you all could make it here. I know the weather is crazy, but we all are Mumbaikars, so we are kind of used to it. but isn't this we all what we dream of? Sitting in a bookstore with some dim lights and some beautiful conversation, and also some amazing coffee and a food that we just had. So thank you once again, everyone. I would love to start this conversation right now because I know you have been here for a while. But before that, I have somebody who's very special, and also somebody who's been very instrumental for Sharvi to come up and write this book. And I'm sure me and Sharvi are just kind of looking forward to exchanging this conversation, and the book is very interesting. But before that, I would like to invite on stage
our special guest for today's evening, Dr. Anjali Saraogi, and she's the founder of Career. Has said the thank you, but I have not, so I would like to. First of all, thank you for everyone who took time out of the busy day to come here, despite this weather, decide to come here. Thank you all so much. You have no idea what all this means to me. I think we all say that God invites us places, but since God has put obstruction, or if you've still come here, I think that definitely shows how much we all were destined to meet here today. Thank you all so much. So, as my father shared earlier right now, to me, the journey matters more than the destination, but more than that, I believe what matters to me is the culmination of all the people, all their sacrifices, and all their inputs which have brought me here. My parents, who have supported me in every way, shape, and possible, who have laid the foundation from which this book was built. Sagar sir, who gave me and my book, my dream, a chance. Thank you so much, sir. The book maker, Suhail Mathur sir, who took me to Sagar sir, who paved that way. Thank you all so much. And our dear influencers who are here today, thank you all so much for coming here, who have taken it upon themselves to not just represent and make money-making books, but to help out new authors, Indian authors. Thank you all so much. Thank you so much. That's such a warm. थैंक यू। देश के बाहर रहते हुए अपनी संस्कृति से जुड़े रखने का ये काम आप लोगों ने कैसे किया? वो एक चैलेंज था ज़रूर, पर देश से बाहर रह के कैसे किया। एक्चुअली बचपन से ही हमारे घर पे, मतलब बचपन से ही यूट्यूब में जैसे पेपा पिग चलता था, जैसे इंग्लिश सीरियल चलते थे, वैसे ही उसी पैरेलली रामायण महाभारत की शॉर्ट स्टोरीज चलती थी। और ऐसा हुआ कि शायद उसको इंटरेस्ट आने लगा अपने पुराण में, और एक बार जब इंटरेस्ट आता है तो वो अपने आप वो आगे उसको एक्सप्लोर करने लगी। अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि बेसिकली उसको बहुत ज़्यादा पता है। ये प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि महाभारत और रामायण का उसको ज़्यादा पता है, और हम उससे सीखते हैं। अभी कोई एक स्टोरीज होती है, जब अभी बता रही थी कि महाभारत उनको लिखना है, तो ऐसे कोई एपिसोड्स है जो हम लोग घर पे डिस्कस करते हैं, तो ऐसा काफ़ी बार होता है कि वही हमें बताते कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, वो ऐसे ही हुआ था, तो मैंने ये देखा है वो देखा है। तो बस हम लोगों ने सिर्फ उनको इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आगे का कारोबार तो ऐसे ही चलता गया। उन्होंने अपना खुद का ही राह बना दी। मैम आप कितना जुड़े हैं अपने डॉटर के इस बुक लॉन्च के साथ? बुक लिखने में सबसे ज़्यादा समय शायद आपने बिताया होगा उनके साथ। हाँ जी। नहीं, उसको प्रोत्साहन देना मेरा काम था, विच आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से किया है, एंड आगे भी करते रहेंगे डेफिनेटली। इफ़ शी वांट्स टू डू दैट, डेफिनेटली हमारा सपोर्ट तो हमेशा रहेगा, एंड इट शुड बी। आप दोनों भी जागते थे जब वो बुक लिखती थी, या ऐसे कुछ मोमेंट आते थे जो आप लोग डिस्कस करके फिर उसके बाद वो राइट करते थे? हाँ, एक मज़े वाली स्टोरी है कि उसको जब वो लिखती थी तब उसको ऐसा चाहिए होता था कि बेसिकली आज सुबह वो लिखे, तो रात को जब हम लोग मतलब एक साथ बैठते थे खाना खाने के बाद, तो हम लोग उसको आधा घंटा पढ़े। तो ऐसे कई सारे इवनिंग्स थे जो हम लोगों ने तीनों ने मिल के उसने पढ़ा है, और हम लोगों ने तीनों ने उसको एंजॉय किया है। और जो भी सजेशन आते थे तो हम लोग डिस्कस करते थे कि नहीं ये पीस आपको ऐसा लिखना चाहिए था, या ऐसे सोचो इसके बारे में तो और अच्छा आ जाएगा। तो हमारा तो योगदान उस तरीके से था कि बस अब हम सुने और उसको वक्त दे, और बेसिकली जो हमारे मन में रिकमेंडेशंस थे, सजेशन थे, उसको बताएं। बाकी तो वो खुद समर्थ है, वो उसको जो फीडबैक को लेके आगे उसको कैसे करना है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ऐसे से अमृता ने बताया कि सपोर्ट करना और उसको सुनना, आई थिंक वही हमारा रोल था। और शायद उसको भी वही चाहिए था कि कोई सुने बेसिकली स्टोरी, और क्रिटिकली इवैल्यूएट करके फीडबैक दे दे। तो वही हम लोगों ने किया। आप लोगों ने कभी ऐसे कहा है कि नहीं आपको यही बुक पढ़ना है, क्योंकि आज जिस तरीके से मॉडर्न चल रहा है, मॉडर्न ज़माना चल रहा है, उससे लेकर लोग अलग अलग चीज़ें लेकर चलते हैं, तो ऐसे में इस तरीके की बुक लिखना, आप लोगों ने कुछ उर्दू पर कभी ऐसा कहा था कि बाबा आपको इसी लाइन में चलना है, या ऐसी कुछ है कि आपको इसी तरीके की बुक लिखना है, या अपने आप ही उसके अंदर इस तरीके के संस्कार अपने आप आ गए? ऐसे तो हम लोगों ने कहा कभी नहीं। एक्चुअली उसकी किताब पढ़ने की जर्नी, पहले जैसे उन्होंने बताया कि पर्सी जैक्सन
और हैरी पॉटर वहाँ से शुरू हुई थी। तो ऐसे कोई घर पे पाबंदी नहीं थी कि इसी जॉनर का या इसी लिहाज का बुक पढ़े। तो मतलब फ्री था, उसको जो जो मर्जी आए पढ़े, लेकिन पढ़े, रोज़ पढ़ना ज़रूरी है। शायद जो यूट्यूब में वो पुराण की स्टोरी देखती थी या रामायण महाभारत पढ़ती थी, आई थिंक उसमें अंदर से इंट्रिंसिकली उसको शायद मोटिवेशन आया कि दोनों का मेल किया जाए। मतलब अपने अपने पुराण प्लस जो जो साइफा या जो जो यंग बच्चों के लिए पर्सी जैक्सन या हैरी पॉटर जैसे किताब है, उसको अगर दोनों को फ्यूजन करा जाए तो काफ़ी मज़ेदार आउटपुट आ सकता है, जो यंग बच्चे पढ़ने के लिए इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, प्लस अपनी जो 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 वैल्यूज़ है वो भी हम लोग सटली पास कर सकते हैं। आई थिंक उसका वही प्रयास था, दोनों को मर्ज करके एक अच्छा आउटपुट प्रेजेंट करे। शायद वो आज हम लोग देख रहे हैं उसकी। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे आज इस बुक लॉन्च पे हुआ है, कैसा लगा? आप देश से बाहर रहते हुए भी अपनी संस्कृति को साथ में लेकर चल रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है बुक बहुत अच्छी है और एक 17 साल की लड़की के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी किताब लिखी हुई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें वापस लाती हैं अपनी रूट्स के तरफ, जो हमारा इतिहास है, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे महाकाव्य हैं, उन सब के बारे में लिखते हुए इसको बहुत ही मॉडर्न तरीके से लिंक किया है। तो किताब बहुत अच्छी है और आप सब ज़रूर पढ़िएगा। आपने कुछ शब्द पढ़े हैं उसमें, कैसा लगा उसका एक्सपीरियंस? तो जब मैं आज ये सेशन मॉडरेट करने आई थी शार्वी के साथ, तो ऑफ कोर्स मुझे किताब पढ़नी थी और जब मैंने किताब पढ़ी तो मुझे लगा कि कितनी सुंदर तरीके से उसने सब कुछ पिरोया है साथ में, और सारे जो कैरेक्टर्स हैं बुक के, वो आके एक फाइनल एक ऐसा सेगमेंट बनाते हैं कि रीडर उसमें जाता ही जाता है, जाता ही जाता है, इतना डिटेल आउट हो जाता है कि कहानी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे बुक को लेकर? हाँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी कहानियाँ हैं। हम कई बार डरते हैं कि हम लिखें कि उन्हें या ना लिखें। मुझे लगता है हम सबको कुछ ना कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि हमारे सबके अंदर एक स्टोरी टेलर है। और ये जो किताब है ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, आपको बहुत बहुत अच्छी लगेगी। ये बहुत सारे पहलुओं को टच करती है और जब आप इसे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितनी सुंदरता से एक किताब को बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से पिरो कर इसको एक सुंदर बुक के रूप में शार्वी ने प्रेजेंट किया है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक एंड आई गेस यू ऑल शुड रीड इट। थैंक्स। ओके ओके, मैम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपके। थैंक यू सो मच। क्या बताना चाहेंगे इस बुक के बारे में, क्या अलग है जो लोग इसे महसूस करें? आपके डेफिनेटली ओके। तो मेरा नाम शार्वी पटवर्धन है। मैं 17 ईयर्स ओल्ड की हूँ और मैं एक्चुअली कतर में रहती हूँ। सो मैं बहुत दिनों से ये नोटिस कर रही थी कि हमारे अपने जो इंडियन बच्चे होते हैं उनको अपने इतिहास के बारे में इतना पता नहीं होता है और इतने प्राउड भी फील नहीं करते। सो मुझे लगा कि हमको एक हैरी पॉटर, पर्सी जैक्सन जैसी किताब लिखनी चाहिए जो हमारे इतिहास के बारे में हो। सो ये किताब है, इसमें सब कुछ है। अपना धर्म, अपने देशभक्ति और हमारे रामायण महाभारत, हमारे सारे स्टोरीज, सारे गुण, हमारे आयुर्वेद योग, हमारे सारे प्राउड मोमेंट्स। सो प्लीज़ ये किताब प्लीज़ पढ़िए। और मैम, कैसे ये सोच आई कि आपने ये बुक लिखना स्टार्ट किया और कौन कौन से लैंग्वेज में है, कौन कौन से लैंग्वेज में है और किस तरीके से बुक लिखना? ओके, तो अनफॉर्चुनेटली अभी तो सिर्फ इंग्लिश में बुक है। अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा पॉपुलर होगी तो हम हिंदी मराठी सब में पब्लिश ज़रूर करेंगे। सो आइडियाज़ वहाँ से ही आए कि मैं अपने देश में, अपने धर्म में बहुत ज़्यादा प्राइड फील करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अपने एज के और सारे हिंदुस्तानी अपने धर्म और अपने कंट्री में इतना ही प्राउड फील करें। सो ये बुक इसकी लिए ही है। इसमें मेन कैरेक्टर किसे रखा है आपने, जैसे सोच के ये बुक लिखा? सो इस बुक में मेन कैरेक्टर का नाम कार्तिका सावरकर है। सो आपको कंफ्यूजन में भी हो भी सकता है कि ये वीर सावरकर के बारे में है क्या नहीं। तो अगेन उनके आइडियोलॉजी के बारे में तो ज़रूर है। तो ये जो लड़की होती है वो एक ऐसी दुनिया में चली जाती है जहाँ पे हमारे इतिहास में सारे जो चीज़ें हैं, हमारे योग है, आयुर्वेद है, हमारे महाभारत असुर देव है, वो सारे अभी भी लोगों के साथ, मानव के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो इन सब के बीच में सबको लगता है कि ये लड़की कल की हो सकती है। सो ये बुक उसके बारे में है कि क्या पॉलिटिकल नुआंसेस आ सकते हैं जब हमें हमारा कल की अवतार मिलेगा। तो ये सोच कैसे है, खास करके ये इस तरीके की चीज़ों को आपने कहाँ रिसर्च किया या किस तरीके से इससे
नाउ इस इंस्पिरेशन का यश तो मेरे माँ बाप को ही जाता है, मेरी माँ को, मेरी आई को स्पेसिफिकली। उन्होंने कतर में होके भी हमारे इतिहास, हमारे इतने सारे जो गुण हैं उन सब का मुझे पता रहने दिया। आई स्टिल नो अबाउट ऑल ऑफ इट, सो उसका यश तो उनके जाता है। सो रिसर्च तो हमारे रामायण महाभारत, हमारे इतने स्टोरीज़ है उनसे की है मैंने, जो हमारे लिए भी अवेलेबल है। सो प्लीज़ अगर आप भी इस बुक के जैसे लिखना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो ये बुक तो पढ़ी ही, मगर हमारे जो वेद है, पुराण है, उनका भी रिसर्च बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे जनरेशन के लिए। सनातन धर्म को लेकर के काफ़ी देश में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो ऐसे में जो युवा हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे इसको डेफिनेटली। अगेन युगों से ऐसे होता आ रहा है, सनातन धर्म को लेके चीज़ें होंगी, लोग बहुत कुछ बोलेंगे, मगर इम्पोर्टेंट यही है और इस बुक का मोटिव यही है कि हमको पता चले कि हम कौन हैं, हम उसमें प्राइड फील करें, और हमें ये पता चले कि हमारे धर्म ने सॉरी कंटिन्यू किए, हमारे धर्म ने इतने सालों से, इतने वर्षों से, इतने इन्वेडर से, इतने वॉर से वो गुजरा है, और हम अभी भी जिंदा है, हम अभी भी यहाँ हैं, हमारे धर्म में कुछ तो होगा। इसलिए हमने इस बुक में, और ऐसी भी बहुत सारी बुक्स जैसे बहुत से एडेप्टेशन है जिसमें हमने ये सनातन धर्म हम जागृत है, हम जीवित रखते हैं। सो प्लीज़ अपने आप में भी सनातन धर्म हमेशा जीवित रहेगा। जब ये बुक लिख रहे थे कुछ ऐसा स्पेशली आपने कुछ ऐसा महसूस किया इस बुक को लिखते समय, या कुछ ऐसे यादगार कोई पल बताना चाहिए? एंड इस बुक का मेन इमोशन है, जो इमोशन मुझे फील हुआ वो यही है, देशभक्ति, हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए अटूट प्यार। हम कहाँ से भी हैं, हम कहाँ भी रहते हैं, मैं तो कतार में रहती हूँ, मैं भारत में भी नहीं रहती जब मैं ये किताब लिख रही थी और अभी भी, मगर मैं यही बोलूँगी कि हमारा सनातन धर्म हम सब के रगों रगों में चलता है। सो आप कहाँ भी होंगे और ये किताब पढ़ भी कहाँ से ही होंगे, तो सनातन धर्म हमेशा अपने दिल में रखना। तो अब जब कतार में थे तो कुछ ऐसी घटना हुई कि आपको ये बुक लिखने का मन हुआ? सो मैं बता रही थी, मैंने जब एक किताब लिखनी शुरू की थी तो मैं लाइक 9वीं कक्षा में होंगी मे बी। सो हमारे क्लास में चल रहा था कि आप बताइए कि आपके फेवरेट स्टोरी क्या है, जैसे फेरी टेल क्या है, ऐसा कुछ बताइए। सो सब ने स्नो वाइट, सिंड्रेला, ऐसे हमारे जो यूरोपियन स्टोरीज होते हैं वो ज़्यादातर बोले, और मैंने महाभारत बोली। सो इस चलते हमारे पूरे क्लास में डिबेट शुरू हो गई कि हम हमारे महाभारत, हमारा इतिहास, हमारा साथ धर्म में ऑर्थोडॉक्स है, इतना बैकवर्ड है, हम इसके बारे में क्यों पढ़े, क्यों करें। सो तब मुझे पता चला कि अगर हमारे युवा, अगर हमारे यूथ, हमारी जनरेशन, हम अब हिंदुस्तानी भारतीय, अगर हम अपने इतिहास को, अपने धर्म को इतना कम लिखेंगे तो और लोग क्या सोचेंगे। सो इसलिए ये इंस्पिरेशन मोमेंट था कि मुझे अब ऐसी किताब लिखनी है जो हमारी यंग जनरेशन को भी अपील करे, मगर हमारे इतिहास के बारे में बात करें। महाभारत और रामायण से बहुत चीज़ें आपने उठा के अपनी पुस्तकें में डाली है। सो इंस्पिरेशंस तो बहुत है डेफिनेटली, कि अब हम बात कर रहे थे मेन सिबलिंग रिलेशनशिप की, कार्तिका और करण में, हमारे सारे एपिक्स में, हमारे सारे किताबों में सिबलिंग रिलेशनशिप, फैमिली बॉन्ड्स, ये सब बहुत एम्फेसाइज किया हुआ है। अगर आप कृष्ण बलराम देखिए, आप श्री राम लक्ष्मण देखिए, सब कुछ है। मगर अगेन बिकॉज मेन कैरेक्टर मैंने इस बार लड़की ली है, तो मुझे ये भी एक्सप्लोर करना था कि इस टाइप ऑफ सेटिंग में वो सिबलिंग रिलेशनशिप कैसे होगी। सो हमारे सारे बुक्स में वॉरफेयर, कुरुक्षेत्र बोलेंगे हम, या अस्त्र शस्त्र, इस पर बहुत फोकस किया जाता है, और वॉर के मॉरल्स, या हमें मॉरल्स क्या लिखने चाहिए, वायलेंस के मॉरल्स क्या होते हैं, हिंसा अहिंसा, ये सब क्या होता है। और आज के पॉलिटिकल स्फीयर में ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिबेट है। सो ये डिबेट भी उस मॉरल कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट करता है कि अगर हमारे महाभारत रामायण के जो वैल्यूज़ है आज इस वक्त में, इस टाइप ऑफ ग्लोबल सिनारियो में हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। कृष्ण और अर्जुन की बुक में सुना कि आपने कुछ और क्या अपने विचार कौन से डाला है कि जिससे कि आने वाला जो पीढ़ी है आपसे प्रेरित हो सके, इस पर थोड़ा इस प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो हाँ, श्री कृष्ण की जो कोई भी टीचिंग्स है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत बड़ी अपने आप कृष्ण भक्त हूँ। सो इस बुक में डेफिनेटली उनके बहुत उल्लेख हैं। तो कृष्ण अर्जुन को सबसे बड़ा लेसन क्या सिखाते हैं महाभारत में, कि अपना कर्म करो, कि पहले कोई भी हो, अपनी फैमिली हो, अपने ब्रदर्स हो, सिस्टर, कुछ भी हो, अपना कर्म करते जाओ, और कुछ भी हो तो हमारे धर्म का संरक्षण ही तुम्हारे सबसे बड़ी ड्यूटी है। तो वो बुक में एक मोटा मेजर थीम था कि कुछ भी हो जाए अपने धर्म को और अपने कंट्री को सबसे आगे रखना चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में आपने पुस्तक लिखी है और आपकी फैमिली का कितना बड़ा सपोर्ट रहा है, माँ बाप में से कितना ज़्यादा सपोर्ट जितना बोलूँ उतना ही कम है।
इस बुक में जितना हाथ मेरा है उससे लाइक कई ज़्यादा मैं बोलूँ कि मेरे फैमिली का हाथ है, मेरे माँ बाप का हाथ है. सो मेरे माँ ने लाइक आई सेड बहुत छोटी उम्र से मुझे अपने रूट से बहुत कनेक्टेड रखा. वो रामायण महाभारत हो, हमारे वैल्यूज़ हो, वो इंटरेस्ट पैदा किया जाके मैं जाके अपने वेद पुराण पढ़ लूँ. ये इंटरेस्ट मेरी माँ के से आता है. और मेरे पिताजी ने डेफिनेटली इस बुक प्रोसेस में मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया था कि ये पब्लिशर नहीं बोला कुछ नहीं, नेक्स्ट पब्लिशर को सेंड करो, ये उसने नहीं बोला ओके नेक्स्ट पब्लिशर को सेंड करो. सो वो मोटिवेशन होता है कि आप इतनी लॉन्ग प्रोसेस है, आप डेफिनेटली थोड़े थक जाते हो. वो मोटिवेशन है वो मेरे पिताजी और मेरे माँ ने डेफिनेटली मुझे दिया है. और सपोर्ट तो उन्होंने ढेर सारा किया है. ऐसे माँ बाप आपको लकी स्टार से ही मिलते हैं, आई वुड से. फाइनली आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों आपकी पुस्तकें लोग पढ़ते हैं? Like I said again, हमारी जो जनरेशन है लोग बहुत हमें बोलते हैं कि हम ऐसे हैं हम वैसे हैं, मगर आई वुड डेफिनेटली से कि आज जनरेशन वी आर कमिंग बैक टू रूट्स. हम घर वापसी कर रहे हैं. हमें इंटरेस्ट है योगा में, आयुर्वेदा में, हमारे वे ऑफ लाइफ में, हमारे इतिहास में. अब सिर्फ ये करना है कि हमें उस इंटरेस्ट को फ्यूल करना है, हम उसे इंटरेस्ट को आग देनी है. और ये बुक यही करने का एक प्रयास है मेरी तरफ से कि जो को भी इंटरेस्टेड है हमारे इतिहास में उसे इस वर्जन में वो इतिहास समझाया जाए कि वो इंटरेस्ट हम फ्यूल कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके अपने आप वो अपने वेद पुराण में इंटरेस्ट भी लाए. सो अगर आप ये बुक पढ़ लेंगे और अगर उसके लिए आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट आ जाए अपने सनातन धर्म में, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी. थैंक यू सो